Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar, and once again, welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So, actually, in this lecture, we are going to discuss the definition of linguistics and we will analyze the definition of linguistics in details. So, what is linguistics? So, I hope so all of you already know about that linguistics is the scientific study of our language. Okay, so we are going to analyze the definition of linguistics that here we have two terms, scientific study and language. What is the meaning of scientific study and how can we describe language? What is the definition of language? So I hope so you will learn a lot. So let's start without wasting any time. Okay, so in this definition, we have two terms scientific study. The former one is scientific study, and the latter one is language. What is scientific study? So, actually, here we have to define that scientific. So, that word is derived from science. What is the meaning of science? A knowledge that is gained by experiments. So similarly here we can say that scientific study is a kind of study that involves scientific methods, scientific moods, scientific models, and even though we can say that physical situations, etc. So that is called scientific study. Okay, so the latter term which we have, language. How can we describe that? What is language? So actually normally it is taught by teachers that language is a true language is a medium that helps us to communicate. Language is a channel that helps us to communicate. Actually, that definition is good, but you can't say that is the proper definition of a language. Actually, we can't define language in a single sentence that language is a channel that helps us to communicate. Even though in my opinion I can say that language is a device. Language is a device that saves our history, culture, knowledge, traditions. Language shows your personality. Language shows your tone, attitude, behavior. So I think so that definition is good. Instead of you can say that language is a medium to communicate. So actually language is a vast term, so you can't define language in a single sentence. So I hope so that is clear to all of you that what is scientific study and what is language. So I hope so that is clear to all of you. Okay, so now we have to do the post-mortem of that word linguistics. Okay, so linguistics, actually here we have a word linguist. What is the meaning of linguist? A person who studies a language, that is called linguist. So actually here we have root L-I-N-G, ling. What is the meaning of ling? Ling mean language, and ist is a suffix which is used at the end of a word, and that gives us the meaning of a person or doer, a person who does something. Uh, so like theist. Okay, in theist we have also ist. So what is the meaning of theist? The mean God and ist mean a person. So a person who believes in God, that is called theist. Similarly here we can say that what is the meaning of linguist? A person. Ling mean language, ist mean person. So a person who studies a language, that is called linguist. Okay, so the next term we have ICS. Okay, just wait a sec. ICS. Okay, ICS normally is used at the end of words. You can say that at the end of the names of subjects, like mathematics. In mathematics, we have ICS at the end of that word. Similarly, politics, genetics, statistics. So actually, we use ICS at the end
of the names of subjects. So similarly here linguistics is the name of a subject. So we have to use the function of linguistics must be singular, because names of subjects exist in plural form, but the function is singular. So we have to use linguistics in singular function. Like we can't say that linguistics are the scientific study of a language. We have to say linguistics is the scientific study of a language. Similarly, I can't say linguistics are my favorite subject. I have to say linguistics is my favorite subject. Like mathematics is a difficult subject. So similarly, linguistics is a difficult subject. I can't say linguistics are a difficult subject. So I hope so that is clear to all of you. हाँ ओके, सो मैं अभी इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और आसानी हो जाए। तो ये देखें, हमने आज के लेक्चर में लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा एनालाइज किया कि लिंग्विस्टिक्स की जो डेफिनेशन है वो है क्या। तो जैसा कि देखिए, आप लोगों को भी पता था कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी होती है किसी भी लैंग्वेज की। आ लैंग्वेज, अच्छा आ जो है ना, ठीक है, आ आर्टिकल होता है। आ के दो मीनिंग होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये देख लो यहाँ पर फिलहाल आप इतना याद रखना, आ का मीनिंग एक तो एक होता है, ठीक है। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही आ का मतलब जो है वो एनी भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखो, बिकॉज अगर मैं कहता हूँ ना लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आ लैंग्वेज, यहाँ पर आ का मतलब जो है वो एनी है, ठीक है। यानी कि एक लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी तो है, लेकिन वो सारी लैंग्वेजेस की आप कह सकते हैं, ठीक है। आ लैंग्वेज मीन एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज में सारी की सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो हमने इंक्लूड कर ली हैं। सो आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इसको हमने डिस्कस किया कि साइंटिफिक स्टडी जो है वो होती क्या है। सो साइंटिफिक स्टडी एक ऐसी स्टडी है जिसमें साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मूड्स या साइंटिफिक मॉडल्स, इवन फिजिकल सिचुएशन जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। बिकॉज साइंटिफिक जो वर्ड है ये साइंस से निकला है। साइंस का क्या मतलब होता है, यानी कि एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा इल्म जो आपको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मिलता है, उसको आप साइंस कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप इस बात को कह सकते हैं। और लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन होती है, तो नॉर्मली ऐसे पढ़ाया जाता है कि लैंग्वेज एक मीडियम है जो हमें हेल्प करता है कि हम कम्युनिकेट कर सकें, हम एक दूसरे के साथ बातचीत जो है वो कर सकें, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये जो डेफिनेशन है ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन है एक लैंग्वेज की। इन माय ओपिनियन जो लैंग्वेज की डेफिनेशन है जो मैंने आप लोगों को बताई वो ये है कि लैंग्वेज एक डिवाइस है, ठीक है, जो सेव करती है, जो महफूज करती है आपकी हिस्ट्री को, आपके नॉलेज को, आपके कल्चर को, आपके ट्रेडिशंस को। इवन यू कैन से दैट कि लैंग्वेज जो होती है वो आपके टोन, बिहेवियर, एटीट्यूड को भी बताती है। और लैंग्वेज ही तो होती है जिसके ज़रिए आपकी पर्सनैलिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को दिखाया जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत वास्ट टर्म है, आप इसको एक सिंगल सेंटेंस में नहीं डिफाइन कर सकते कि लैंग्वेज एक मीडियम होता है जो हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। हाँ, ये एक लैंग्वेज का एक फंक्शन जो है वो हो सकता है, ठीक है। सो इसके बाद हमने पोस्टमार्टम जो है वो किया लिंग्विस्टिक्स का, कि लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास, जस्ट वेट अ सेक, लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास एक वर्ड है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु स्टडीज़ अ लैंग्वेज। एक ऐसा इंसान जो लैंग्वेज की स्टडी करता है उसको आप लिंग्विस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास रूट वर्ड है लिंग। लिंग का मतलब होता है लैंग्वेज, जहाँ पर भी लिंग वर्ड आ जाता है ना उसका मतलब लैंग्वेज होता है। यहाँ अब ये देखो कि आई एस टी जो है उसका क्या मतलब है। आई एस टी का मतलब होता है डूअर, एक पर्सन को कहते हैं, एक इंसान को कहते हैं। लिंग मीन लैंग्वेज एंड आई एस टी मीन पर्सन। सो अ पर्सन हु स्टडीज अ लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। और आई सी एस जो है ये नॉर्मली यूज होता है सब्जेक्ट्स के नाम के आखिर में, ठीक है। जैसा कि देखो मैथमेटिक्स है तो वहाँ पर भी तो आपके पास लास्ट में आई सी एस सी आ रहा है ना, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स है, पॉलिटिक्स है, जेनेटिक्स है, ठीक है। सिमिलरली लिंग्विस्टिक्स है, तो यहाँ पर भी तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक सिंगुलर टर्म है, ठीक है।
यानी कि एक सब्जेक्ट का नाम है, इसको मैं जब भी यूज़ करूँगा मैं सिंगुलर फंक्शन के तहत इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। हाँ, ये एग्जिस्ट तो करता है प्लूरल में, लेकिन इसको मैं यूज़ जो है वो सिंगुलर फंक्शन पर करूँगा। लाइक आई कांट से लिंग्विस्टिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, बिकॉज ये एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इसको यहाँ पर फिर हमें सिंगुलर यूज़ करना पड़ेगा कि लिंग्विस्टिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। सो आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक्स की, तो लिंग्विस्टिक्स के जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स हैं उसके जो फादर हैं वो नॉम चॉम्स्की हैं, ठीक है। क्यों हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक्स के जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के जो फादर हैं, ठीक है, वो नॉम चॉम्स्की हैं, जो अभी भी ज़िंदा हैं और जिनकी एज जो है वो 94 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उनकी एक थ्योरी भी है लैट, ठीक है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये एक डिवाइस है जो आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करते हो, ठीक है। हर कोई बच्चा जो होता है उसमें एक इनेट एबिलिटी होती है, ठीक है, वो उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को अक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो ये डिवाइस जो है ये कितनी देर तक काम करती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो कि आज के लेक्चर में हमने लिंग्विस्टिक्स की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया, तो आप लोगों को ये जो लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन है ये सभी को समझ आई होनी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।